So the definition of odds and evens is very simple. Odd number वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। जैसे 3 एक ऑड नंबर है क्योंकि अगर आप उसको 2 से डिवाइड करो तो फ्रैक्शन में आंसर आता है 1.5 में, जबकि अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करो तो यू गेट 5, राइट? तो इसमें एक क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि हम नेगेटिव नंबर्स को ऑड कहते हैं। द आंसर टू दैट इज यस। -3 is odd, -4 is even. Odds and evens, basically they are classes of integers. So before we could go into solving odds and evens related questions, I wanted to throw a random question your way and to remind you what the GRE requires of you. So ये question कह रहा है कि 25 by x is a positive integer. Let's just write that down. The 25 by x results in a positive integer, right? What are positive integers? 1, 2, 3 and so on. और फिर क्वेश्चन ये है कि how many values can x possibly have, and if your answer is 3 you're wrong. And I think ये typical GRE trap है कि आप उसी तरह कन्वेंशनल सोच रहे हो कि अच्छा यार 25 by x जो है वो पॉजिटिव इंटीजर कब आएगा। 25 किससे डिवाइड होता है? 25 1 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, 25 से डिवाइड होता है। So there you go. 1 पे you will get a positive integer 25, 5 पे you will get 5, 25 पे you will get 1. And that is where you're wrong because it says that 25 by x is a positive integer. x के बारे में कुछ नहीं कहा, x तो कुछ भी हो सकता है. So let's say मैं 25 by, let's say if I divide 25 with 25 by 10, which is the value of x, which is technically 2.5, right? What will I get? I will get 10. That's also a positive integer. What if I divide it with 25 by 100? I will get 100. And how many zeros can you put here? Right? There's no limit to that. So the answer to this is that x can have infinite values. So what would happen if you were to add an even number into another even number, or if you were to subtract an even number from another even number? For example, if we do 2 plus 4, that's adding two even numbers. That gives you 6, which is another even number. But what if we subtract 2 from 8? We get 6, that's another even number. What if we subtract 8 from 2? We get -6, which is yet another even number. तो evens को आप लोग जितनी दफ़ा भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, आपका आंसर हमेशा इवन ही आएगा. ऑड्स में डिफरेंट ट्रेंड है. अगर ऑड को आप इवन टाइम्स ऐड करते हो तो इवन आता है. बाय इवन टाइम्स आई मीन कि इफ द नंबर ऑफ ऑड्स दैट यू आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग फॉर दैट मैटर आर इवन, फॉर एग्जांपल 2 ऑड्स हैं या 4 ऑड्स हैं या 6 ऑड्स हैं, तो आपका आंसर इवन आएगा. फॉर एग्जांपल इफ आई ऐड 1 into 3 I get 4, right? दो ऑड्स हैं और आंसर इवन आ रहा है. बट इफ आई ऐड 1 into 3 and then into 5 I get 9, right? तो उस केस में क्योंकि odd numbers of odd थे तो odd आंसर आएगा. So the trend with odd numbers is कि if you are adding or subtracting odd numbers even times, you will get an even answer. And if you're
adding or subtracting odd numbers odd times, तो you will get an odd answer. So ये तो हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ट्रेंड्स. मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं. अगर आप एक इवन नंबर को एक और इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट उसके टेबल में ही वो आएगा, राइट? अगर टू को आप दुनिया की किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई कर लो तो वो चीज़ टू के टेबल में आ रही है, तो बाय डिफॉल्ट वो इवन होगी. सो इट डजेंट मैटर कि आप इवन्स को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करो, your answer is definitely going to be even. Similarly odds को आप जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर जो है वो हमेशा ऑड ही रहेगा, क्योंकि अगेन ऑड्स को आप यूं भी देख सकते हो कि ऑड्स को मल्टीप्लाई जो आप कर रहे हो दैट्स बेसिकली एडिंग ऑड्स ऑड टाइम, राइट? अगर आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 9 आंसर आता है, और उसका इफेक्ट वही है कि आप 3 को जो कि एक ऑड नंबर है उसको ऑड टाइम्स ऐड करो, 3 + 3 + 3 which gives you 9. Let's look what would happen if we were to divide evens and odds. Division के rules थोड़े से elaborate हैं, but they're very much linked with the multiplication rules. And there I go. Even को अगर आप एक even से divide करते हो तो इसको आप यूं भी चेक कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे एक even fit करता हूँ तो ये even से multiply होकर मुझे even दे रहा है, which makes perfect sense. And let's think of an example like 8/2. It gives you an even number. Even by even is giving you an even number. One thing that I missed in this multiplication वाली ऑब्जर्वेशन वॉज कि अगर आप एक इवन को ऑड से भी मल्टीप्लाई करते हो तो वो इवन ही होता है. एंड आई थिंक दैट वाज इम्प्लिसिट इन मी सेइंग कि अगर आप इवन को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्टेंट आंसर जो है वो बाय डिफॉल्ट इवन के टेबल में है, राइट? सो इवन इनटू ऑड विल आल्सो बी इवन. Similarly, अगर मैं यहाँ पे odd fit करता हूँ तो even into odd is giving me an even, which makes perfect sense. Let's think of an example. 10/2 gives you 5. Even by even is giving you odd. Also fraction तो हमेशा possibility होती है, क्योंकि जब भी आपका न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो एक फ्रैक्शन आ जाएगी, like 2/8. अगर आप एक odd नंबर को एक और odd नंबर से डिवाइड करते हो, let's fix an odd here. Odd into odd is giving me odd, makes perfect sense. Let's think of an example. 21/7 gives you 3. अगर मैं इसको even यहाँ पे plug in करता हूँ तो odd into this even is giving me an odd, doesn't make any sense. So it's not possible. Fraction, like I said, is always a possibility. If I divide an even by an odd तो फिर क्या होगा? If I fix odd here, तो odd into odd is giving me an even. Doesn't make any sense. Odd into odd will always be odd, and you can check examples. If I plug in an even, to odd into an even is giving me an even, which is quite possible, but let's think of an example. 10/5, yeah, even by odd gives you 2. So odd is not possible, even is possible, and fraction is possible. So even by odd का या तो even answer होगा या fraction होगा. Let's look what would happen if we were to divide an odd with an even. तो अगर मैं यहाँ पे even plug in करता हूँ तो that means कि ये even इस even से multiply हो रहा है और odd दे रहा है. Doesn't make any sense, not possible. Even एक odd से multiply होगा फिर भी उसको even देना चाहिए. Doesn't make any sense. Not possible. So fraction is the only possibility when you are dividing an odd number with an even number. अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको डेटा दिया हुआ है कि ए बी एक ऑड नंबर है. लेट्स जस्ट स्टॉप राइट देयर.
और डेटा को समझते हैं कि व्हाट डज द डेटा इम्प्लाई, व्हाट इज द डेटा इम्प्लाइंग। ए बी अगर ऑड नंबर है तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं ए और बी की? मे बी आई कैन मेक अ टेबल, इफ यू प्रेफर मेकिंग टेबल्स डू दैट। सो अगर मैं दोनों को इवन कर देता हूँ तो ए बी तो इवन होगा, सो यू नो दिस इज नॉट पॉसिबल। दोनों को मैं ऑड कर देता हूँ तो दिस इज पॉसिबल। एक को इवन एक को ऑड कर देता हूँ फिर भी ये इवन होगा, नॉट पॉसिबल। अगर मैं एक को ऑड और एक को इवन कर देता हूँ तो ये फिर भी इवन होगा, so again not possible. The only possibility which satisfies the data given in the question is when both A and B are odd. And the question is asking, can B be even? And I think it's apparent that no, it cannot be even. आप इसको यूं भी कर सकते हो, लाइक अगर आपको टेबल्स कंफ्यूजिंग लगते हैं तो आप यहीं से ही ब्रेक डाउन करके देख लो कि इवन इवन हो सकते हैं, इवन ऑड हो सकता है, ऑड इवन, और ऑड ऑड हो सकता है, वट एवर सूट्स यू। I would say this question is kind of similar to the last question, but a little more complex. Let's give it a read. It says, given that A, B plus C is odd. Let's just stop right there and write that. A, B, in fact, let me write in the middle. A, B plus C जो है ये odd है, where A, B and C are integers. All right, A, B और C जो हैं ये integers हैं, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल कुछ भी हो सकते हैं, और हमने वो ऑप्शंस पिक करनी है which must be true, जो हर हाल में ठीक होंगी।
So let's just start by delineating the possibilities जो कि a b plus c equals to odd से आती हैं, right? अब a b को अगर मैं देखूं तो इट्स अ प्रोडक्ट, और जब प्रोडक्ट होती है टेक्निकली दैट्स वन नंबर, राइट? 2 क्रॉस 3 is 6 and c is a standalone number. ऑड होने की दो सूरतें मुझे जहन में आ रही हैं। एक तो ये है कि ए बी का प्रोडक्ट इवन हो और सी ऑड हो। इवन प्लस ऑड विल गिव यू एन ऑड, यस। और दूसरी पॉसिबिलिटी जो है, लेट मी एक्चुअली पुट अ रेक्टेंगल अराउंड इट। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ए बी ऑड हो और सी इवन हो, राइट? तब भी ऑड आएगा। अब बट विद इन दैट, क्योंकि ए बी का प्रोडक्ट इवन है ना, तो हम आगे ये भी हमें देखना चाहिए कि ए और बी खुद क्या होंगे। अगर ए बी का प्रोडक्ट इवन है तो ए और बी, ये तो सी है, सी तो हर केस में ऑड होगा क्योंकि हमने यहाँ पे उसको ऑड कहा हुआ है। हो सकता है कि ए इवन हो बी ऑड हो तब भी ए बी का प्रोडक्ट इवन आएगा, दोनों इवन हो तब भी इवन आएगा, ये ऑड हो ये इवन हो तब भी इवन आएगा, और सी तो इस केस में ऑड ऑड ऑड। सो 1 2 3 केसेस हमने डिलिनिएट कर लिए हैं फॉर द पॉसिबिलिटीज ऑफ ए बी एंड सी, जिसमें ए बी प्लस सी ऑड आ रहा है एज गिवन इन द क्वेश्चन। इस केस को देखते हैं। सो ए बी का प्रोडक्ट ऑड होने का एक ही तरीका है कि दोनों ऑड हो और सी इवन हो। सो देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी नंबर 4, कि ए और बी ऑड हो और सी इवन हो। Now that we have understood what that data means, we can confidently look at the options and see which one of them must be true. A plus C is odd. Must it be true? Let's see. यहाँ पे A plus C, odd plus even, odd plus even is odd. Yeah, यहाँ पे तो ठीक है. A plus C is odd here as well. I just spotted कि यहाँ पे odd नहीं है, odd plus odd even देगा, so this goes out. A B C का product even है, यहाँ पे even है, क्योंकि एक नंबर भी product में even हो गया तो पूरा product even हो जाएगा। यहाँ पे भी even है, यहाँ पे भी even है, यहाँ पे भी even है, it's a must. A plus B C is odd. Let me check that. So A plus B C का product क्या होगा? Odd into even, even is odd. A plus BC is odd again. A plus BC यहाँ पे even हो जाता है क्योंकि A even है, B भी even है, C odd है, तो A, right, which is something even, plus B into C, even into odd, that's even plus even, that should give you an even, तो वो must की कैटेगरी से निकल जाएगा। Question is asking you कि एक्स वाई इवन होगा लाजमी या नहीं अगर 2x plus y odd है। So let's just start with the data. 2x plus y is odd. Let's just see what does that mean. तो अगर हम 2x को देखते हैं
2 is an even number, that into an even number will always give you an even number. So 2x as a whole तो even हो जाएगा. And for 2x plus y to be odd, the only option here is if we make y odd as well. So must x y be even? हाँ, इसमें ये है कि x की दो possibilities हैं. ठीक है, 2x as a whole तो even होगा, लेकिन x तो even और odd कुछ भी हो सकता है ना. So इसको टेबल में बना देता हूँ. So y will always be odd as we saw, but x can be even or be odd. और इन दोनों केसेस में 2x plus y जो है वो odd ही आ रहा है, right? Must xy be even? No, because both x and y can be odd, and if they are odd, if both of these numbers are odd, तो फिर xy even नहीं होगा. आप इसकी एग्जाम्पल भी ले सकते हो. x को 1 कर लो, y को, just to confirm your answer. I am not giving this example कि आप इसी तरह से अप्रोच करो क्वेश्चन को. So x 1 है और y को भी odd लेते हैं, 3 ले लेते हैं. तो 2 into 1 plus 3 gives you 5. There you go. Right, so the question is asking you कि x square odd होगा अगर x एक odd integer है. I think yes, I think it's rather obvious, क्योंकि अगर आप एक odd number को एक और odd number से multiply कर रहे हो, the answer has to be odd, and I think this would stay true for any odd raised to power any natural number, right? आप odd की power 1 2 3 4 5 कुछ भी कर दो, आंसर odd ही आना चाहिए. Second question is saying कि x is an even integer. Okay, let's just write that कि x जो है वो even integers क्या होते हैं? 0 भी even है, 2 4 so on, it could be negative as well. Is x की power n even if n is an integer? Okay, so the scenario is that we have something even raised to the power something n which is an integer. And what are integers? I mean, integers can be negative as well, तो ये -1 -2 and so on हो सकता है. It can be 0 1 2 so on. And I think the answer to this is no, because even raised to the power 0, anything raised to the power 0 is 1, which is odd. So I think the lesson that you should take away from this question is कि जब आपको एक वेरिएबल दिया हुआ हो, जैसे n एक वेरिएबल था, एक इंटीजर था, राइट, डिफाइन नहीं किया हुआ कि n एग्जैक्टली क्या है, तो आप उसकी एक्सट्रीमिटीज चेक करो. अगर एक्सट्रीमिटीज चेक नहीं कर सकते, जैसे इंटीजर, इस केस के अंदर इंटीजर जो है वो नेगेटिव में भी इन्फिनिटली यहाँ पे जा रहे हैं, पॉजिटिव में भी जा रहे हैं, तो फिर आप पोलैरिटीज चेक कर लो. अगर मैं जीरो ना भी चेक करता, नाउ दैट आई एम थिंकिंग अबाउट इट, तो इवन रेज टू पावर समथिंग नेगेटिव ऑल्सो टेल्स यू कि x की पावर n जरूरी नहीं है कि वो इवन हो. क्योंकि देखो, अगर समथिंग like let's say this x is 2 और उसकी पावर -10 है, that will give you a fraction which is neither even nor odd, right? So just check the polarities. अगर इंटीजर की बात है तो नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव को सबको चेक करो.
Okay, so x and y are positive integers where x is even. Must this x raised to the power y minus 1 be even? Hmm. X even है तो basically the scenario is कि even raised to the power something minus 1 है and that something is a positive integer. Both of these are. So positive integers कहाँ से start होते हैं? Zero तो positive नहीं है, it's neutral. तो इसका y की value 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है. And again, let's just start by testing the extremity. And if we do that, 1 minus 1 करें तो it's even raised to the power 0, which gives you 1. So the answer is no. मतलब लेकिन अगर ये क्वेश्चन कह रहा होता कि can x raised to the power y minus 1 be even, तो फिर आंसर yes होता. राइट कि हो सकता है या नहीं हो सकता, उसमें तो फिर पॉसिबिलिटीज हैं. अगर y की पावर 2 है तो even raised to power 2 minus 1, which is 1, which is that even number, right? But the question is asking you कि must this x raised to power y minus 1 be even, and the answer to that is no. So it's given that x plus y is even. Let's just stop right there and write that down कि ये even है और y plus z जो है वो odd है. Must x, y plus z be odd? चलो इस क्वेश्चन पे बाद में आते हैं. Let's just understand the data first. तो x plus y, let's just look at this. x plus y even कब होगा? एक केस तो ये है कि x भी even हो, y भी even हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि x और y दोनों odd हों. अगर मैंने y को, आई थिंक ये मिस्टेक हो सकती है कि वहाँ पे आप y को कोई डिफरेंट चीज़ ले लो, क्योंकि अगर हमने इधर y को इवन रखा है तो डेफिनेटली द y वुडंट चेंज इन y प्लस z. सो यहाँ पे भी y इवन होगा. अब y प्लस z ऑड होने की पॉसिबिलिटी एक ही है कि z ऑड हो, राइट? और अगर यहाँ पे y ऑड है तो डेफिनेटली वहाँ पे भी ऑड होगा, और y प्लस z इस केस में तभी ऑड होगा अगर z even हो. Yeah. So I think that's pretty much it. Let me make a table for you to understand it better. तो हमारे पास दो possibilities आई हैं x y z की. एक में x और y even है, z odd है, और एक में x और y odd है और z even है. और इन दोनों, सिर्फ इन दोनों possibilities में
ये जो क्वेश्चन का डेटा वो सेटिस्फाई हो रहा है कि x प्लस वाई इवन भी है और y प्लस जी साइमल्टेनियसली ऑड भी है. मस्ट एक्स वाई प्लस जी बी ऑड? लेट्स सी. सो एक्स वाई प्लस जी जो है यहाँ पे क्या आता है, इवन इंटू इवन, इवन एक्स वाई का प्रोडक्ट इवन प्लस ऑड gives you odd. Odd into odd is odd, xy का product is odd, plus even gives you odd. It's a yes, because there are only two possibilities, और दोनों possibilities के अंदर xy plus z जो है वो odd आ रहा है. So the first time that I solved this question was I just looked at the question कि यार x क्यूब y जो है वो पॉजिटिव है. ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है कि वो जीरो के राइट साइड पे, और जीरो के राइट साइड पे सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं. तो दो ही सिनेरियोज हैं, या तो x और y दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि अगर x नेगेटिव है तो उसका क्यूब भी नेगेटिव होगा, राइट, और वो नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर आपको पॉजिटिव दे देंगे. और दूसरा सिनेरियो ये है कि दोनों पॉजिटिव हों. फिर जब मैंने x स्क्वायर y को पढ़ा कि वो लेस देन जीरो है, then I realized कि y has to be negative because x square, like I mentioned in a previous lecture, कि किसी चीज़ का भी स्क्वायर जो है वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता किसी भी रियल नंबर का, राइट, और जीआरई पे सिर्फ रियल नंबर्स आते हैं. तो if y is negative for sure, then x is negative for sure as well, because otherwise x cube y will not be positive. And adding to negative numbers will always give you a negative number. So the answer to this is no, but you can always make tables. X cube y is greater than 0, x square y is less than 0. दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, आप करके देखो. अब इस केस में तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये नहीं हो रहा, राइट. दूसरे केस में ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी हो रहा है. थर्ड केस में ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये सेटिस्फाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज नेगेटिव, ये हो रहा है. तो थर्ड केस भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन के अंदर डाटा बताया वो कंप्लीटली इन लाइन होना चाहिए विद वट एवर वी आर टेस्टिंग. और इसमें ये सेटिस्फाई हो रहा है बट ये नहीं हो रहा, right? So the only possibility is if x and y are both negative, and if that's the case, then x plus y can never be greater than 0. Okay, so the answer to this question is yes. And I think the catch here is कि someone might assume कि यार R और S हैं तो उनकी different values होनी चाहिए. First, in variables can take any value. R की value 2 भी हो सकती है और S की भी at the same time 2 हो सकती है, right? तो R by S will give you 1 and S by R will also give you 1. Both of these are integers. अगर आप different values भी check करते हो तो I mean you can come up with a scenario. For example, R is 5
s is -5, and r by s gives you an integer, s by r also gives you an integer. So yes, if r by s is an integer, s by r can also be an integer. सो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन ये है कि उनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। तो अगर तो आप एक प्राइम नंबर को दूसरे प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस आंसर के दो से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर क्या आता है? 21 आता है। 3 और 7 बोथ आर प्राइम, या दे आर। और 21 को 1 भी डिवाइड करता है, ऑफ कोर्स 3 भी डिवाइड करेगा और 7 भी डिवाइड करेगा और 21 खुद भी डिवाइड करेगा। सो आई थिंक द आंसर टू दिस इज नो। I mean, if you are multiplying a prime number with another prime number, so this will be your answer, and this will be divisible by 1, prime number 1, prime number 2, and of course itself. Can the product of two prime numbers be even? I mean, prime numbers, when we think about prime numbers, हमारे ज़हन में क्या आता है? Let's start with the first prime number. It's 2. Yeah, the product of two prime numbers can be even for sure, because 2, and I think that's the lesson to take from this question. Okay, 2 is the only even prime number. It's an exception. Baki 3, 5, 7, 11, 13, 17, they're all odd. And it's kind of intuitive that we are able to guess ke kaun se numbers prime hote. Not always, like people do it with 39, like in 39 prime hai 3. Like it's not prime, but it feels like it's prime. Long story short, yes, it can be even if one of those two numbers is 2. अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर वो जो मैंने आपको ट्रेंड्स बताए थे मल्टीप्लिकेशन के, आई थिंक यू कैन मेक यूज ऑफ दोज, क्योंकि बोथ x एंड y आर बिटवीन 0 एंड 1, सो लेट्स जस्ट ड्रॉ दैट। 0 और 1 के दरमियान में है x और y। हो सकता है x पीछे हो सकता है y पीछे हो। अब जब हम क्वांटिटी a को देखते हैं तो x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो फ्रैक्शन जब दो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो छोटी फ्रैक्शन और जीरो के दरमियान में कहीं आंसर आता है, तो एक्स वाई जो होगा वो कहीं x से भी पीछे होगा, छोटी फ्रैक्शन से पीछे होगा। अब जब हम उस एक्स वाई का स्क्वायर करते हैं, लाइक उसी एक्स वाई को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब उसके और जीरो के दरमियान में कहीं आंसर आएगा, यानी कि उससे भी छोटा आएगा। तो द आंसर शुड बी क्वांटिटी ए। Quantity A is bigger for sure. You can pick values to confirm it. यूं करके देख लो, अब एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है यहाँ पे 0.02 आ रहा है, और अगर मैं एक्स वाई का स्क्वायर देखता हूँ जो कि दिस इज टेक्निकली एक्स वाई स्क्वायर्ड, तो दैट शुड गिव मी 0.004, which is lesser than 0.02. Guys, it took me years of hard work as a one-man army, helping hundreds of GRE students ace the GRE and achieve some of the global highest GRE scores.
to be able to give this course out for free. So please show me your support because I plan to continue doing this for other courses as well. And your support really counts. Tell your friends about my channel, like my videos. I do not dislike them. If you do not like something, let me know in the comments. And of course, subscribe to the channel, turn on the notification bell, and I love you all.